it's a luck based system. If you are very lucky, you might get a very good manager, you might get a very good project. Mhm. Firstly, coming to disadvantage, basically salary. Everybody know that teachers used to pay very less amount as compared to every other companies, other MNCs. Right. क्या बोलते हैं, मैं नौकरी लिंक्डइन हर जगह से अप्लाई कर रहा था, और जब उसका हुआ तो मुझे पता लगा कि AWS में ऐसी ओपनिंग भी आती है। मुझे Okay. पता भी नहीं था, मुझे तो बस AWS प्रोडक्ट में यही पता था भाई SD होता है, कोडिंग करना चाहिए, डीप आनी Mhm. चाहिए, तभी हो Right. पाएगा। Right. बाकी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is AirTech. Hope you all are having a fantastic day. Let us begin with our today's video. So we have a special guest with us who is currently working as a cloud support associate at AWS, and they have previously worked at TCS. So we are going to ask them a lot of questions. Okay, so stay tuned, watch this video till the very end. Hi Pranshu, welcome to our YouTube channel. Hope you are having a great day. Hi, Pawan. How are you? Thanks for giving me the opportunity to be welcome in your channel. Yeah. Yeah, I'm doing good. Okay, great, great. So, Pranshu, first we will begin with your introduction and your educational background and how did you Mhm. join TCS, okay, and your journey afterwards. So, can you please Mhm. tell us about that? Yeah, sure. I have done my BTech from one of the college in Kanpur only. Mhm. It's come under the Dr. APJ Abdul Kalam University, which is in Lucknow. And basically, I'm from IT background. My branch Okay. is IT. Mhm. And after completing my BTech in 2021 only, in July 2021, I completed my BTech. And in only August only, 21 August was my joining date at TCS, and uh, I had joined TCS at the profile of Ninja profile only. Okay. How was your project training? Like, how did you find a project and like, did the HR approach you or like, did you approach Mhm. some people, some projects and overall? So, आपका Uh, experience कैसा था mhm. by then? Basically, after uh, basically ट्रेनिंग होने के बाद आपके पास कॉल्स आती हैं. Mhm. So I have received a call from one of the manager. Basically, Mhm. it depend on person to person. Some people used to get early stage of some people used to get earlier calls, and Mhm. some people used to get means मेरे पास ऐसे दोस्त भी थे जो 3-3 मंथ से बेंच पे थे, उनके पास कोई कॉल नहीं आई. वो Right. ऐसे चिल कर रहे थे. और Yeah. कुछ थे कि मतलब उनके पास ट्रेनिंग भी चल रही है, फिर भी कॉल आ रही है, ट्रेनिंग वाले मेंटर बोल रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, फिर प्रोजेक्ट पे आना है, उनके साथ ऐसा हौच-पौच हो रहा था. So basically, I received the call from one of the manager, and it was just a single call. Many person used to get multiple calls also. Was So right. for me, it was just a one call, and manager has called me of that project and asked me about my background and what are the things I have done in my college life. Mhm. And in that project, I got assigned. Okay, Basically, great. it was a support project. Hmm. Okay, okay, great, great. So, Hmm. and a lot of people actually have this kind of like we get a lot of Mhm. questions regarding this point कि डिजिटल की जो सैलरी आती है वो टोटल बेसिक में इंक्रीज नहीं होती है, वो जस्ट एडिशनल एक वैल्यू देते हैं एंड उसके अंदर उसकी सैलरी Yeah. आती है. तो ये बात सही है या नहीं है? Yeah, it's totally correct. Means the candidate who joined TCS from digital profile only, their हम्म. basic salary is different, हम्म. and means they get a increase. They get a fixed proportion of basic salary. Means their basic is different from Ninja. हम्म. And when we upgrade from Ninja to digital, the basic will be same of the Okay. Ninja candidate and the person who is upgraded to digital. In हम्म. digital profile, incentive of around 25 or 23K has been increased added on only. Okay, okay, okay. Yeah. So I mean, this is a true thing, right? Because a Yeah. lot of people have had this kind of doubt. That is the reason we asked. And coming back to the next thing, so Pranshu, one more doubt that a lot of people have is if you are like elevated to the digital cadre, right? So after that, what happens is you have mentioned about the incentives, right? The half of the salary is credited into the incentives, okay, and the Yeah, rest yeah. half is Hmm. into the basic pay, right? So and Mhm. one more question a lot of people have is if you get to a digital cadre, right? So after that, what happens is Mhm. if you get a bad band, in that case you will be Mhm. again brought back to the ninja profile. Is it true or is it false? Yeah, it means it's a true, and Mhm. means I have I knew some people who have Mhm. been suffered this also, and they don't have any option. They just switch the company also, because ये क्लॉज जब आया था तब मतलब मुझे पता था ये क्लॉज आ चुका है तभी Mhm. मतलब मेरे छोड़ने से पहले 4-5 मंथ पहले ही आया है ये क्लॉज. और इसमें मतलब काफी लोगों ने सफर भी किया है क्योंकि उनको Mhm. पहले नहीं पता था उनका क्या बोलते हैं. और ये क्लॉज़ आया और उनका क्या बोलते हैं रेटिंग खराब हुई थी और उसके Mhm. बाद जो नया ऑफर लेटर जनरेट होता है, तो उनका नेगेटिव में सैलरी आई थी। क्योंकि उनको Okay. पहले तो सैलरी पूरी मिल चुकी थी और ऑफर लेटर आने के बाद उनको नेगेटिव में सैलरी आई थी। Right, right. मतलब ये मुझे इसलिए पता है क्यों वो जब जॉइन
ज्वाइनिंग हुई थी तो हम लोग कई सारे टेलीग्राम ग्रुप थे। तो Mhm. उन टेलीग्राम में मतलब इट्स अ कम्युनिटी ऑफ 20 टू 30 के पीपल्स एंड पीपल Mhm. यूज्ड टू आस्क देयर डाउट। वहीं पर मुझे सब पता चलता था कि भाई कैसा-कैसा लोगों के साथ क्या हो रहा है। Right, हुँ, correct. So I'll take a pause here and I'll हुँ, tell the audience that we do हुँ, have a हुँ, Telegram group of active, a lot of हुँ, active हुँ, members who constantly ask the doubts. They try to solve the questions asked by some other people also. So if you want, I will give the link in the description. You can go and join the Telegram group as well. Okay. So Pranshu, can you tell us what are the advantages and disadvantages of joining TCS as a fresher? Disadvantage. Firstly, coming to disadvantage, basically salary. Everybody know that TCS used to pay very less amount as compared to every other companies, other MNCs. Right. So basically, salary is very important for her because when we see our peers, means our friends, those who Mhm. are working other companies, you used to compare the salary also because they Right. are. Uh, when we used to live in Bangalore, Mhm. there means expense are Very very high. much. Right. So we can't afford this much salary in living there Bangalore. और दूसरी चीज ये सरकारी ऐसा फील आता है एडवांटेज में ये कह सकते हो कि कुछ भी कर लो कोई तुम्हें नहीं निकालने वाला जब तक Right. तुम्हारा कोई तुम बहुत बड़ा कांड ना कर दो कि मतलब टीसीएस की रेपुटेशन खराब हो रही है। बाकी कुछ भी कर लो तुम लड़ भी लो जाकर कोई तुम्हें नहीं निकालने वाला है। ये सबसे अच्छा फायदा है। Right. और बाकी फ्रेशर में मैं ये कहूँगा कि टीसीएस मत जॉइन करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। अनलेस और अनलेस तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑफर नहीं है या Option. बहुत ही ज़्यादा नीड है तुम्हें टीसीएस जॉइन करने की। लोग Mhm. ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब जैसी कोई कुछ करेगा नहीं, पर कुछ टाइम बाद तुम खुद को लगेगा तुम्हें मतलब 2 या 3 साल बाद तुम खुद छोड़ोगे कंपनी। तो इतना क्या ही सोचना ना, कोई भी कंपनी जॉइन कर लो, 2 साल, 1 साल काम करो, उसका स्विच कर दो, क्या दिक्कत है? और रिटायरमेंट के लिए रखो टीसीएस को, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। Yeah. क्योंकि एट द एज ऑफ 28, 29 तुमको लगेगा स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे तो आ ही जाएँगे, मतलब Right. क्या ही Correct. फ़र्क पड़ता है Correct. इससे। हाँ। That is हुँ, true. हुँ। That is 100% true. हाँ, Because a वही। lot of people actually, like even a lot of people when they join TCS, हुँ, their हुँ, हुँ। seniors tell them that TCS is a company which you should join at the last, not the first. या मतलब या रिटायरमेंट लेने के लिए जो कंपनी बेस्ट है वो TCS है. वही वो मतलब गवर्नमेंट जॉब जैसी है, Right. सारा सब कुछ मिलने वाला है, क्या दिक्कत है? इसलिए लास्ट में जॉइन करो व्हेन यू रीच द मैनेजर पोजीशन मतलब। Right, correct, correct. Absolutely. हुँ, So you just mentioned that you won't recommend joining TCS to the freshers, right? हुँ, हुँ। Unless and या until they करेक्ट। don't have any other options or they don't हुँ, have हुँ, any हुँ। other company in their hand, right? हुँ, Offer in हुँ, their हुँ, hand. हुँ। So, करेक्ट। and talking about the people who have already joined TCS as a fresher. हुँ, So हुँ, उनके लिए हुँ, हुँ। what is the best time? उनको switch करना कब switch करना चाहिए? मतलब after how many years or after gaining how much experience should they switch the TCS? बेसिकली 1 साल तो तुम्हारा बॉन्ड ही होता है कि Hmm. 1 साल तो टीचर्स जो निंजा जॉइन होता है बॉन्ड देना पड़ता है, नहीं तो 20 Hmm. 50 के बॉन्ड दो। मतलब मेरे पास कुछ लोग और भी पूछते हैं कि भाई 9 मंथ में छोड़ सकते हैं क्या? वो Hmm. छोड़ सकते हैं, 9 मंथ में तुम रिज़ाइन करो, 3 मंथ नोटिस पीरियड, एग्ज़ैक्ट 12 मंथ हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। Right, बस तुम्हारे 1 दिन भी पहले नहीं होने चाहिए, अगर 1 दिन भी 12 महीने से पहले हो रहा है तो तुम्हें बॉन्ड पे करना पड़ेगा। right. और लोग पूछते हैं कि नोटिस पीरियड क्या बाय आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल Hmm. नहीं हो सकता है, नहीं हो बाय सकता आउट है. हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर जब तक तुम लड़की ना हो या कोई मेडिकल इश्यू ना हो तुम्हें तब। Right. बाकी तो नहीं होता है बाय आउट। मैंने लोगों को देखा है, उन्होंने मेडिकल इश्यू दिखा के ही बाय आउट किया है, बाकी तो Hmm. नहीं होता है नॉर्मल अगर तुम बोलो कि मुझे रिलीज़ चाहिए कि क्या, वो नहीं होता है। और बेसिकली और कुछ क्या था क्वेश्चन भूल गया। Yeah, and one more thing, I saw a meme somewhere. I don't know. I think हाँ। it was on Twitter. हुँ, हुँ। वहां पे बताया था अच्छा कि देखो। हाँ, हाँ। इलॉन मस्क को टैग किया था एंड बोला था इलॉन मस्क आप दुनिया की हर चीज बाय कर लोगे पर टीसीएस में से बाय आउट नहीं कर पाओगे. हाँ, नोटिस वही। पीरियड है. हाँ, हाँ, तो मैं ये लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मतलब जैसे अगर आप सर्विस बेस में क्या बोलते हैं टीसीएस में ही हैं, तो मतलब मैंने जितना देखा है कि सर्विस बेस्ड कंपनी 2 साल एक्सपीरियंस माँगती हैं। मतलब जैसे Right. आप टीसीएस से इन्फोसिस जाएँगे, इन्फोसिस से Mhm. कॉग्निजेंट जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, तो वो मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस माँगती हैं। तो मैं Right. तो सजेस्ट करूँगा कि आप सर्विस बेस स्विच करना है तो आप 2 साल तो रुकिए और Mhm. अगर मतलब आपके पास स्किल्स हैं या कुछ भी है तो आप अप्लाई करते रहिए और व्हेन यू गेट अ ऑफर यू कैन जॉइन दैट कंपनी। देयर नो Right. इश्यूज। Right. हुँ। Correct. Correct. Fair enough. So Pranshu, my next question for you is that हुँ, like हुँ। how can you change a project in TCS or how hard it is to change a project? So I will say that it's a luck-based system. If you Mhm. are very lucky, you might get a very good manager, you might get a very good project. Mhm. Means if you got lucky means आप बहुत अच्छी किस्मत है आपकी तो Mhm. आपका मैनेजर मान लो अच्छा है और प्रोजेक्ट खराब है तो वो आपको रिलीज कर देगा। आपने उसको आप उसके पास गए, रोए, अपना कंसर्न रेज़ किया तो वो रिलीज कर देगा। पर मैंने जितना ज़्यादा देखा है लोगों को, उनका रिलीज नहीं होता है क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी ज़्यादा सपोर्टिव प्रोजेक्ट हैं और उनको मतलब
मतलब ऐसा सीन है कि उनको बस लोग चाहिए, काम करवा लेंगे वो, बस और कुछ नहीं है। राइट, राइट, वो करेक्ट। रिलीज़ नहीं मिलता उनको। अब बहुत ही कोई ले आया कि मतलब मुझे मेडिकल इश्यू है या हम्म। लोकेशन चेंज करानी है, कोई लड़की है, मतलब उन सब का हो जाता है, पर ऐसा होता नहीं जल्दी। मैंने ट्राई किया था, मुझे तो नहीं मिला था इतना बंदा। मैंने तो ओके। रिज़ाइन भी कर दिया था इसीलिए, फिर ओके, प्रोजेक्ट रिलीज़ मिला मुझे। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई रिलीज़ नहीं मिलता है इतनी ईज़िली। ओके, ओके, ग्रेट। एंड प्रोसेस क्या होती है, मतलब अगर किसी को रिजाइन भी करना है, पुट डाउन हुँ, हुँ। पेपर्स, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो उसका हुँ, हुँ। प्रोसेस कैसे रहता है? So there's a no hard and fast rule. You just have to write a mail stating that you are resigning from your position, हम्म। assistant system engineer position, and please start counting my notice from the day I put it on my paper. हम्म। And in two, you have to mention your manager, and in CC, you have to mention your HR. Nothing else. Okay, that is the entire process, right? That's it. Yeah, yeah. Okay, okay. And Hmm. a lot of people actually tell us that they did not take the acceptance. So Hmm, hmm, acceptance hmm. लेना भी बहुत जरूरी है, right? Notice period Yeah, count yeah, के लिए. correct, correct. Because means in TCS HR are very lazy. मीन्स हम्म। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा। एचआर को आप मेल करेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेगा। आप कॉल करेंगे, रिप्लाई टीम्स में तो कभी अवेलेबल आपको दिखेंगे नहीं। और आपने उनको मेल भेज दिया तो आपको लगेगा नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया है, पर वो हम्म। एक्सेप्टेंस मेल नहीं भेजते हैं। वो बस आपको एक्नॉलेज मेल भेजते हैं। तो आपको उनको Okay. फॉलो अप लेके एक्सेप्टेंस मेल लेना पड़ेगा। और हम्म। जब आपको एक्सेप्टेंस मेल में आपका लास्ट वर्किंग डे लिखा होता है और बाकी फॉर्मेलिटीज लिखी होती हैं, तो जब वो मिल जाता है तब आप ऑफिशियली काउंट कर सकते हैं कि आपका हो चुका है। Notice period और शुरू एक हो. और चीज़ होती है कि अल्टीमेटली इसमें शायद इन सर्विस या कुछ लिख के आता है, और जब आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है उसमें लिखता है करंट रिज़ाइन एंड सर्विस नोटिस पीरियड। ये 2 चीज़ होती हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आप रिज़ाइन कर चुके हैं या आप नोटिस पीरियड पे हैं आप। ओके, ओके। हुँ, एंड हुँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब नोटिस पीरियड पे ऐसा बोला जाता है हुँ। कि वो हनीमून हनीमून पीरियड रहता है, राइट, लोगों का? हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ। कुछ काम करना पड़ता है या कैसा रहता है, मतलब? Basically depend upon project only. Again, I have to repeat that. Means if the project is so hectic, you have to work. Manager हम्म। will make you pressurize that you have to work. हम्म। He will not grant you the leave. And हम्म। basically, in notice period, we can't avail any of the leaves. Only sick leave are you can avail. So राइट। you have to preserve your sick leave for that also, because people used to take sick leaves frequently. Means हम्म। whenever manager don't approve the leave, people used to take sick leave. But I Leave. will suggest you that preserve that sick leave for the notice period only, because 3 month राइट, notice period is such a long time, and you राइट, have to give many interview also in राइट, that करेक्ट. time only. Yeah, yeah. Right, that is correct. That is Mhm, absolutely mhm, correct. So this is mhm, for all the viewers who are currently watching the video. Okay, guys. mhm. So make sure that if you want to resign from TCS, what you can do is you can preserve your sick leaves. Okay, don't Yeah. utilize your sick leaves so that you can utilize only the, because only the sick leaves are you can utilize, Mhm. right, in the notice period. Yeah, 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 All other correct. leaves such as earned leave or casual leave, they Mhm, will be mhm, encashed, right? The amount mhm. of leaves that you No, take. no, only which two leaves you mentioned? Casual Casual and leaves and earned leaves. so I can say that casual leave will be elapsed, means they will Okay, become waste. okay, Whatever okay. leaves, yeah. Yeah. Only earned leave you will get the money. Okay, okay. So that is the case, Means guys. So if yeah, you are before resigning you have to use your all all casual leaves. leaves, yeah, and preserve your sick leave and earn leave. Earn leave for you will get the money, and casual sick leave you will get the You leaves. can utilize it, right, right. Yeah, So for correct. all the audience out there who are watching this video, if you want to resign, make sure that you do two things. Okay, the first one is that you utilize your flexi leaves, you utilize your Hmm. casual leaves, and you keep as much as possible for the sick leaves. Keep as much sick leaves you can. And for the earned leaves, it is the case that you will be getting all the earned leaves in cash, right? Yeah, right. Okay, great. So Pranshu, the next question is सबसे important, the one of the most Hmm. asked questions right now. Hmm. जो controversial topic भी है by the way, which is Hmm. salary hike in TCS. तो उसके Hmm. बारे में अगर आप कुछ बताना चाहे तो. Basically, in TCS, hike is between 5% to 2% at most, and it basically depends upon the rating and band you get. And if you get means suppose there are 10% in a team, and there will be only three A band, the rest Mhm. all will be the B band, and 3 to 4 C band over there also there. So means you can guess, and there's a difference. Means if you get as A band, you might Mhm. get a 5,000 hike, and just a giving the example. Okay. And Mhm. if a person got to B band, there's a not a much difference between your salary and his salary. Mhm. Basically, in coming to in hand, there has been difference of about 1.5k, not much more than that. Okay. Mhm. Right. Correct. Mhm. And the next question that we have is again very important. That like, do you know anything about, like, can we rejoin TCS after leaving it? No, we can't join. Yeah, it is their policy, I guess, right?
and you Yeah, will not it's be their able to policy. again. Yeah, basically when we resign, there has been a they used to ask. It's a form. It's just like a acknowledge form. When we resign, that do you want to again join a thesis or not? It's means when we if you feel yes or no, it will depend you, but they don't hire. Okay, great, great. Hmm. And like the last question probably for this session Mhm. that we have is like, how Mhm. did you plan to resign and how did you search for new jobs? And currently you're working at AWS, right? So how is Mhm. your experience over there? Can you tell us about that, your journey? Yeah, sure. Means after I joined TCS, means in August 2020 when I joined Junior at TCS, and after getting the support project, I started thinking for the jobs is at that time only in Hmm. October only, 2021. So I tried switching the project, but it wasn't possible for me. Hmm. So I resigned TCS, but unfortunately or fortunately, you can say I cracked the digital exam, and Hmm. so I thought that be there in TCS for 1 year. Yeah. And in 2022, from May onwards, I started searching for a job because I'm coming 3 महीने बाद मेरा 1 साल हो जाता क्योंकि Right. मई में हो गया था 1 साल हो Right. जाता इसलिए मैं तुरंत तभी ढूंढने लग गया था Right. तो मुझे क्या बोलते हैं मैं नौकरी लिंक्डइन हर जगह से अप्लाई कर रहा था और मतलब जो करियर ऑप्शन होते हैं वहां से भी अप्लाई कर रहे थे और मतलब Hmm. मेरी एक फ्रेंड थी उसका एडब्ल्यूएस हुआ था मुझे नहीं पता मतलब उसने तो रेफरल के थ्रू किया था जब उसका हुआ तो मुझे पता लगा कि एडब्ल्यूएस में ऐसी ओपनिंग भी आती है मुझे Okay. पता भी नहीं था मुझे तो बस एडब्ल्यूएस प्रोडक्ट में यही पता था भाई एसडी होता है कोडिंग करना चाहिए डीप आनी Hmm. चाहिए तभी हो Right. पाएगा Right. बाकी ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो Right. जब उसका हुआ तो मुझे पता चला ओपनिंग के बारे में मैंने करियर सेक्शन से अप्लाई किया था मीन्स Okay. बेसिकली मेरी पोजीशन क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इसमें Hmm. बेसिकली मुझे एडब्ल्यूएस पे काम करना होता है Okay. और इसका पोजीशन थी वो 0 to 1 year एक्सपीरियंस के लिए थी मेरा 1 year हो गया था होने Hmm. वाला था तो मैं इसमें एलिजिबल था तो मैंने Okay. अप्लाई किया और इसमें इंटरव्यू पे आपसे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मीन्स और बेसिक एक कोडिंग क्वेश्चन ये सब पूछते हैं बस इससे ज्यादा नहीं पूछते कुछ Okay, okay. हम्म, So you went to their AWS career portal and then you applied from there, right? या वहां से या अप्लाई किया. करेक्ट या हम्म, Okay, okay, okay. हम्म, Great, great. And the next question that we have is like, what would be the advice to people who have joined TCS or who are going to join TCS? Like, how can हम्म. they crack some product-based companies, or like, what would be your suggestion to them? Basically, if you get a good project, Mm-hmm. then try to learn as much as possible Mm-hmm. because after switching the company, that experience will be very valuable for you. And Mm-hmm. if you haven't got a good project, don't chill there. I will Mm-hmm. suggest them. Try learning, try picking any technology or you want to Mm-hmm. learn and start learning because you are getting a very ample of time. Right, And correct. yeah, that is the main thing I want to tell them. Yeah. Okay. Great. Great. So Mhm, that is really helpful. That I'm mhm, 100% sure that this would be really appreciated by all the viewers who are currently watching this video and all our subscribers and all the people who are like actually watching this video.